नमस्कार. आयच्या ह्या डिबेटात तुमचे सगळ्यांक येवकार. आयचो विशय आसा हो फाटली 8 दीस जाचेर चर्चा चल्ल्या तो किंवा जें दिल्ली जालें आनी जें आम आदमी पार्टीन केलें ताचे उपरांत अकस्मात नवीन होप्स तयार जाल्यात. खंय तरी सगळें वातावरणच सामकें ढवळून गेलां आनी निवडणूक जातकीर सत्ता करपा खातीर धांवपी पक्ष आपूण विरोधाक बसपाक तयार आसा, तुमी सरकार करात अशी भाशा उलोवपाक लागल्या. प्रश्न आसा तो आम आदमी पार्टीने म्हळा की आमी गोंयाकय करतले आनी गोंय हें अशीच एक सिटी स्टेट दिल्ली भशेन जनताय तशीच तितलीच सुशिक्षीत तितल्याच तटस्थपणान सगळी इश्यूं कडेन पळोवपी ना. फाल्यां जर आम आदमी पार्टी गोंयांत जर तितल्याच नेटान आयली, तितल्याच बरे तरेन जर तांणी कॅन्डिडेट घाले आनी तसोच जर प्रचार केलो, गोंया भितर हो जो फॉर्म्युला आसा जो दिल्ली चल्ला तो चलपाक शकता काय कितें हाजेर आमी भासाभास करतात. 4 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. पयली आसात भाजपाचे फुडारी आनी जाणी ग्रासरूट लेवला वयल्यान सामकें काम करून ते वयर सरले निलेश बाब काब्राल सर, स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हजे बरोबर दोतोर ऑस्कर रिवेलो, जांकां खूब जाणांनी राजकारणाक यो म्हूण सांगलें पूण आज पर्यंत ते राजकारणा पासून पयस रावल्यात. घडये ह्या एक्सपेरिमेंटा भितर तांची मतां बदलल्यात काय ना ते पळयतले आमी. दोतोर ऑस्कर रिवेलो आसा आमचे बरोबर. तिसरी आसात आमचे बरोबर आम आदमी पार्टीच्या कोर ग्रुपाचे मेंबर आनी जाणी दिल्ली काम केलां आनी गोंयांत तर तांचो वावर सुरूच आसता ते दिनेश बाब वाघेला सर, स्वागत आहे आपका. आनी चवथी आसात आमचे बरोबर काँग्रेसीचे फुडारी आनी जाणी फाटली 5 इलेक्शनां इलेक्टोरल पॉलिटिक्स लागीं सावन पळयला ते जितेन बाब देशप्रभू. नमस्कार. हांव सुरवात काँग्रेस बीजेपी वयल्यान करता, मागीर तांकां दोग जाणां घेता. हें पळयतकीर निलेश बाब रिजल्ट पळयतकीर असो भंय बी दिसलो हें ते वेगळेंच चल्लां, विचित्र चल्लां म्हणून. ना तशें कांय ना. सी वारें येता तशें थिंग्स चेंज एंड पीपल हॅव गिवन अ मॅन्डेट टू द पार्टी अदर दॅन फ्रॉम काँग्रेस आनी बीजेपी. सी इट हॅपन्स. गोंयांत जेन्ना गोंयांत तूं पळय when it started with different parties, BJP was never there. BJP has come now. So it is the way it goes. So people, whoever they feel, they can, who will perform, or people feel that yes, this party is there who will do something. People have expectations and that expectation leads to getting people फाल्यां elected. जर होच प्रयोग गोंया भितर जालो जाल्यार भाजपा आनी काँग्रेसीक पर्याय म्हूण तांकां पळयतले न्ही काय म्हूण. काँग्रेसी म्हाका खबर ना, काँग्रेसी म्हाका खबर ना, पण भाजपा पर्याय ना दिसता म्हाका. कित्याक वी आर वर्किंग विथ द पीपल फॉर द पीपल. आम आदमी पार्टी भाजपाक पर्याय जावपाक शकना ना पळय आतां तूं म्हाका सांग इश्यू पळय दिल्ली जाल्ले. एवरी स्टेट हॅज डिफरंट इश्यूज. गोवा बाय इट सेल्फ ऑल्सो हॅज इश्यूज आसात ना न्ही. आतां खुबशे इश्यू नो डावट दॅट जे प्रॉमीस केल्ले मे बी इट हॅज नॉट बीन एंडेवर्ड इन द लिमिटेड टायम फ्रेम. डेट यू एग्री? ऑफकोर्स आय एग्री. कितें वाय वॉट इवन इफ इट इज माय पार्टी, इफ इट इज रॉंग इट इज रॉंग, इफ इट इज रायट तशें कितें आहा तर. सो देर आर सम इन्सिडंट्स वेर वी हॅव टू गो फॉरवर्ड. मे बी वी आर लॅकिंग एंड इट इज अ फॅक्ट. बट इट इज नॉट दॅट वी हॅव बीन गिवन अ मॅन्डेट ऑफ 5 years. Even in the 5th year, if there's whatever we have discussed, whatever we have promised people, and tenna जायना, then of course people should think of other views. People will think of Of course they should think what is wrong. सो एक गजाल जितेन बाब निलेशा कडच्यान कळटा की 5 वर्सां भितर एक तरी व्ह्यू तयार जाला की जें सांगिल्लें तें जर केलें ना जाल्यार 5 वर्सां भितर लोकांक परत काँग्रेस न्ही जाल्यार नॉन काँग्रेस नॉन बीजेपी ऑप्शन तयार जावपाक शकता. यू एग्री विथ दीस? हातून 2 प्रश्न येतात. आय वूड से इट इन दिस वे की आयच्या घटकेक गेल्या फावटीचें सरकार गोंयच्या लोकांनी तातूंत जे काही आमी जाका दागी लोक म्हणू शकता अशा लोकांक निवडणुकीत हरयले, परास केले. आज आम आदमी दिल्लीन कितें केलां हो पर्याय न्हय तर सामान्य लोकांनी जे दागी थंय आशिल्ले ज्यांनी राजकीय जे पोजिशन्स आसात ती आपली मिरास जी मानिल्ली अशा लोकांचे जे मनसुबे आसात ते उधळून उडोवपाक लोकच पुढे सरसावले. आणि दोनही पक्षाच्या बाबतीत अशीच परिस्थिती आशिल्ली की प्रत्येक जण म्हणटाले की दोनही पक्षांनी आजपर्यंत हेच कार्य केलें. बीजेपीचे म्हणना परंतु काँग्रेस पक्षान आज दिल्लीन बरेचशे कार्यय केलां, खूबशें काम केलां. तरी आसतना
एक जे नाविन्य लोकां म्हऱ्यान आयलें ते आम आदमी पार्टी ह्या नांवान नाविन्य आयलें आनी त्या नाविन्याक खंयच्याय नाविन्यांक लोक फुडें सरून त्या नाविन्यांक येवकार दितात. तुमकां कितें दिसता हे एक फक्त मिनिट. नवे कितें तरी आयला ताजी क्रेज एक दिस इज मिनिट. नॉट अ कॉन्शियस डिसिजन ऑफ वोटर्स टू गिव देम सच अ मॅन्डेट. नाही, एक मिनिट. हातूंत कितें जालें, गेल्या फावटी जे काँग्रेस पार्टीन काही लोकांनी जनतेचो जो फोकस आशिल्लो जनते म्हऱ्यान किंवा त्या लोकांनी जनते कडेन पळोवपाची जी रीत आशिल्ली किंवा त्यांचे बरेपण जावपाची ही जी वृत्ती आशिल्ली तीच लुप्त जाल्ली. Some of the leaders of the previous government had closed the doors and lost focus on the goodness, the welfare and the well-being of the people of the state. The point is, They paid a price for it. yes, And therefore, I would say the behavior of the electorate was nothing short than what today we have witnessed in Delhi. my point is, when it happened in Goa, they looked at BJP as an obvious alternative. Next time, if they come with the same force, they might not look at Congress as an alternative. They will look at them as an alternative. No, I will dissent. I mean, I will. So let me again say it this way. Last time, BJP was not the alternative. To defeat the Congress was the idea behind voting, but wherever there was a viable alternative. Never in the history of Goa we had 5 independent candidates who have won. So you are saying, One minute. So wherever there were good and proper candidates in the independents, people voted for them. so you are But saying there that was tomorrow, no option. No, my point is tomorrow if they come as the same force, then they are a much credible option than the independents. Allow me. You agree with that? Nilesh agrees with that. You are also saying the No, same thing. we have to learn from what has happened in Delhi. Okay. We will ultimately, local polity will address itself. We are capable of addressing ourselves, Okay. not as a congressman, but as a polity as a whole, Okay. for which we don't require an Aam Aadmi here or To introspect. Okay. So क्या लगता है आपको? You heard both of them agree that if there is an alternative like that, people will look at it. आप कितने चांसेस लगते हैं आपको कि गोवा में सिमिलर काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव देने के? सबसे पहली बात तो मैं ये करना चाहूँगा कि गोवा की जो जनता है वो ज़्यादा समझदार है कंपेयर टू दिल्ली गोवा के जो नागरिक है उसमें ज़्यादा जागृति है और उनके सामने यदि कोई मूल्य आधारित एक सही ऑल्टरनेटिव आता है तो गोवा के जनता उसको बहुत ही अच्छी तरह से उसका स्वागत करेगी कंपेयर टू देश के किसी भी राज्य से. तो आप कह रहे हैं कि गोवा में आप दिल्ली से भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं? प्रदर्शन करेंगे. और आपने देखा होगा इलेक्शन के दरमियान भी हमने गोवा के इंटीरियर पार्ट में जाके सभाएं की थी. लास्ट इलेक्शन के दरमियान बानौली में जहां पर बीजेपी भी शायद सभा नहीं कर पाई थी, हमने की थी सब बहुत बड़ी सभा. कुकोलिम में की थी. फोंडा की हमारी सभा अभी भी लोग याद करते हैं. तो लोगों ने हमारी सभा को जिस तरह से मूल्य आधारित बातें हमने रखी थी उसका बहुत सारा उनके पास वो कोई हम विकल्प के तौर पे तो आए नहीं थे. हम तो एक जन जागरण के लिए आए थे और उस जन जागरण का बहुत सारा फायदा भारतीय जनता पार्टी को उस वक्त मिला. और आज जो स्थिति है वो भी जनता देख रही है कि आज उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ. लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ यहाँ वो अलग है. मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में क्या हुआ आप मात्र परिणाम देख रहे हैं. मैं मात्र परिणाम की बात करना नहीं चाहता. मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में क्या घटा है उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए. दिल्ली में ये घटा है कि आज जहाँ पे एक साधारण आदमी कभी सपने में भी सोच नहीं सकता है कि ये भारतीय राजनीति में वो कहीं इलेक्शन लड़ सकता है. एक साधारण नागरिक. अन्ना जी को भी जब एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या आप इलेक्शन में लड़ोगे तो बोले नहीं, मैं इलेक्शन में लड़ा तो डिपॉजिट जाएगी मेरी, क्यों मेरे पास पैसे नहीं है बांटने को, दारू नहीं है बांटने को. मेरे ख्याल से मिस्टर रिबेलो भी कहीं दफ़ा
जब हमारी बात होती है तो उनकी खचकाट वही होती है मैं पूछूंगा उनसे। कि आज की राजनीति जिस तरह से चल रही है, जिस तरह से पैसा, मसल और मनी पावर चलता है, उसके बीच में क्या एक साधारण आदमी, एक ऑनेस्ट आदमी इलेक्शन लड़ सकता है? ये सवाल था सबसे बड़ा। और मैं आपको ये कहने जा रहा हूं कि दिल्ली के अंदर जब दोनों पार्टियां अपनी टिकटें बेच रही थी करोड़ों रुपये में, तब हम लोग ने जाहिर किया कि दिल्ली का कोई भी नागरिक यदि वो इलेक्शन लड़ना चाहता है आम आदमी पार्टी की टिकट से, तो आके हमारे सामने अपना निवेदन रखे। और साधारण लोग, मैं आपको दृष्टांत दूं, एक राखी बिरला 26 साल की मारूद लड़की, एकदम वाल्मीकि समाज की लड़की, इतने छोटे से घर में रहती है, उसके पास अपना फॉर्म भरने का भी पैसा नहीं था, उसको हमने टिकट दी, उसका प्रचार किया। आप कह रहे हैं कि यू आर एम्पावर्ड। नहीं, मेरी बात, एम्पावर्ड द पीपल। उसके सामने लड़ कौन रहा था? कांग्रेस का एक बहुत बड़ा मंत्री, 2 नंबर का मंत्री, जिसकी एसेट 3-4 हजार करोड़ होगी। मसल पावर में भी बहुत ही लोग डरते थे उसके एरिया में जाके प्रचार करने को। उस आदमी को इस इलेक्शन में उस साधारण सी लड़की ने हराया। तो ये दैट इज द चेंज। दिस इज द चेंज। दोतोर, ताणे ऑलरेडी रेफर केला आणि आजपर्यंत तूही हेच सांगत आयला. Seeing this whole thing, you feel that Aam Aadmi is confident today that he just can't contest, he can win, and he can take on the heavyweights and win. You don't need a symbol which is 20 years old, 25 years old. You just need that intention and that dedication. See, I would want to see this in two perspectives, one from the Delhi perspective and one from the Goa perspective. From the Delhi perspective, I think nobody can deny that this has been such a historic victory by the Aam Aadmi, even if it is in the second place. Simply because the Aam Aadmi party walked the talk. They are doing exactly what they have spoken. If we have to believe that young girl from the Valmiki Samaj won by just spending probably that little amount, everyone believes that she actually spent that little amount. We will never believe this from the traditional parties, even if they ever say that. So, suffice to say that even if you want to ridicule the Aam Aadmi party, you want to just mock it, you want to just dismiss it off as a passing phenomenon and whatever else, the Aam Aadmi ideology, that is already here to stay. You cannot run away from that type of politics that they are going to be practicing. It just is not going to be possible. Simply from the national election in 2014, like I was telling Mr. Waghela, let us look at two scenarios. One, if somehow or the other in May 2014, the Congress, again with its Khichdi and Third Front, manages to cobble up a majority and comes back to power. The same power brokers, the same corrupt system, etc. And Modi does not become the Prime Minister of the country. Clearly, the BJP is going to be in retreat because they've lost, they've played their trump card and they've lost. Who is going to counter that corruption of the Congress all across the country? Only Aam Aadmi Party. Look at it on the flip side. Suppose Narendra Modi comes to power as the Prime Minister with some brute majority and the BJP comes to power. Everyone agrees that Narendra Modi may be honest, may have a development agenda that is very focused, he can deliver, but clearly the man is a dictator. Within the BJP itself, they admit that this man cannot function within the normal democratic traditions. So who can oppose Narendra Modi post PM14? It cannot be the Congress guys because they will have to run with the advocates to Supreme Court, etc., etc., to run away to cover up all their misdeeds and when Modi goes after them. So who will counter them, counter Modi? It will have to be the Aam Aadmi Party. So the Aam Aadmi ideology of democracy, of accountability, of transparency, of empowering the weakest common denominator, that is an ideology that is here to stay. You can't kill it. What about Goa? Coming to Goa, in 2012, when the elections were held, I can categorically state that the Aam Aadmi ideology was already at work here. People were already looking for transparency, were looking for accountability, were looking for a leader who would be able to deliver on these parameters. And so therefore, in 2012, Goa elected an Arvind Kejriwal. His name was Manohar Parrikar. But when he became Chief Minister, he threw off that cloak of Arvind Kejriwal